स्क्रीन देख पा रहे हैं? हेलो, दुष्यंत सर, आप एक बार चेक कर सकते हैं जरा? क्या बोलते हैं उस पर? हाँ, यहाँ से तो आ रहा है अभी। अभी लाइव स्ट्रीम होना चाहिए। ओके सर। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा प्लीज, क्योंकि अभी मैंने एक न्यू जो है लिंक बनाया हुआ है। हाँ, तो ये तो दिखना चाहिए आई थिंक। अभी ये सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर, एवरीबडी कैन हियर। फ्रेंड्स, इज माय वॉइस क्लियर नाउ? हाँ वेंकट सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। Sorry for the inconvenience. There was some disturbance, you know. So I hope you can see my screen now. Okay, friends. So you can ask the queries. दुष्यंत सर, आप पूछ सकते हैं अगर कोई क्वेरीज है। हाँ, यहाँ पे भी मालिक जी कैसे सर? मैं सबके साथ एक बार गो टू मीटिंग लिंक भी शेयर कर देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप क्वेरीज पूछ सकते हैं अभी। अभी आई थिंक सबको मेरी वॉइस आ रही होगी और स्क्रीन भी दिखाई दे रहा होगा। हेलो, क्या किसी को आवाज आ रही है? हेलो, दुष्यंत जी कुछ बोल रहे हैं। सर आपका कुछ मैसेज समझ में नहीं आया कुछ। प्लीज गाइड हाउ एंड व्हाट टू स्टार्ट इन चार्ट। ओके ओके सर, मैं वो गाइड कर दूंगा आपको अभी। थोड़ा सा आपको आवाज आ रही है क्या? पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो मेरा प्रोग्राम है इसके रिगार्डिंग किसी को क्या क्वेरीज है, ठीक है? आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ओके, दुष्यंत जी बोल रहे हैं प्लीज गाइड हाउ एंड व्हाट टू सर्च इन अ चार्ट। ओके, सो चार्ट में बहुत सी चीजें देखनी पड़ेंगी जो मतलब हम एक मतलब इजिली वेबिनार के थ्रू मैं इजिली नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उसको आपको बहुत सारी बेसिक चीजें सीखनी पड़ेगी, ठीक है? फिर भी मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। लेटेस्ट से कि जैसे हमने एक जैसे देखो आप, अगर मैं यहाँ पे एक आप मैंने 15 मिनट का मैं इंट्राडे मतलब चार्ट खोल रखा है किसका, वोल्टास का, जो मैंने आज कॉल भी दिया था, ठीक है? तो आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसने एक रेंज बनाया था, स्टॉक में एक रेंज बना था, ठीक है? 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? यहाँ तक इसके एक रेंज बना है, ठीक है? आप देख सकते हो। तो स्टॉक में जब ऐसा होता है, कभी रेंज बनता है, ठीक है, रेंज बाउंड कंडीशन हो जाती है, ठीक है, तो उस रेंज के बाद स्टॉक कभी रेंज में नहीं आ सकता, ठीक है? देखो प्रीवियसली एक अप ट्रेंड में था स्टॉक,
प्रीवियसली ये स्टॉक अप ट्रेंड में था, ठीक है। यहाँ आके इसने एक रेंज बना लिया, ठीक है। अब इस रेंज के बाद ऐसा नहीं कि स्टॉक रेंज में रहेगा, राइट, स्टॉक रेंज में नहीं रहेगा, राइट। तो क्या होगा कि यहाँ से ये स्टॉक जो है मतलब कुछ मूवमेंट देगा। तो यही मैंने पकड़ा था यहाँ पे 400 604 पे पकड़ा था, इसके हाई के ऊपर। मतलब एक्चुअली मैंने इस टुडेज हाई, आज का जो हाई था ना, उसके हिसाब से इसको पकड़ा था, ठीक है। सो मैंने तो मुझे लग रहा था कि 10 तक जा सकता है, 10-11 तक जा सकता है, बट स्टॉक ने बहुत जबरदस्त मूवमेंट दिखाया, आप देख सकते हो। थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ऐसी चीजों को हमें नोट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो एक रेंज में था, ठीक है, रेंज क्या है 585, ये बड़ी रेंज निकल के आ रही है वैसे, सॉरी थोड़ा सा छोटा करेंगे क्योंकि रेंज हमने लो चैनल हमने एक क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल चैनल हमने बना लिया, ठीक है, रेक्टेंगुलर चैनल, ओके। तो इस रेक्टेंगुलर चैनल में आज की ओपनिंग इसकी यहाँ पे 11th, ये फर्स्ट कैंडल, ठीक है, फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल और ये सेकंड कैंडल, ठीक है। तो सेकंड कैंडल आप हाई देख सकते हो, यहाँ पे आपको हाई ओपन हाई लो वैल्यूज मिल जाएंगी, सो यू कैन लुक एट दिस, ओके। तो आप देख सकते हो 603.95 ये इसका हाई बना था, ठीक है, सेकंड कैंडल में, ठीक है, ओके। और थर्ड कैंडल, लेट मी चेक, थर्ड कैंडल, हाँ थर्ड कैंडल में 604 बना था, ठीक है। तो यहां से मैंने इसको बाई करना बोलता है कि 604 के ऊपर हम इसको बाई करेंगे, ठीक है। तो स्टॉक मैंने फर्स्ट टारगेट दिया था 610 का, तो ये इजिली मतलब कि फर्स्ट आप मतलब जब ये अपना बाइंग रेंज में आ गया, जब स्टॉक यहाँ से इसने मूव किया 604 को क्रॉस किया, तो इजिली मतलब फर्स्ट कैंडल में जो है, हाँ फर्स्ट कैंडल में टारगेट हिट नहीं हुआ था हमारा, 609.75 गया था हाई, और वहां मैंने बोल दिया कि आप प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हो। कई बार होता है कि स्टॉक हमारा जो है वहां से भी कई बार होता है रिवर्स हो जाता है, तो मैंने वहां कह दिया था कि आप यहाँ पे स्टॉक का जो है प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि 25 पैसे का जो डिफरेंस है डजंट मैटर, ओके। आपको एक अच्छा टारगेट मिल चुका था इजिली, इतना बड़ा मूव, ठीक है। मतलब आपको अप्रोक्सीमेटली 5 पॉइंट्स का मूव तो यहाँ तक मिल चुका है, ठीक है। तो ये मैंने कहा क्या दिया यहाँ पे कि यहाँ पे इसको बुक कर लो, ठीक है, राइट। तो उसके बाद स्टॉक देखो कैसे ऊपर भागा। तो ये चीज है, ऐसी चीजों को आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको पहले चार्ट समझना पड़ेगा, चार्ट क्या चीज है, कैंडल्स क्या है, बुलिश कैंडल क्या है, बेरिश कैंडल्स क्या है। तो बहुत सारी कैंडल्स हैं जो ऊपर को जा रही हैं, ठीक है, ग्रीन कलर में, कलर्स को आप देख सकते हो, ग्रीन कलर में कैंडल्स हैं, ये हमारी बुलिश कैंडल्स है, और जो रेड कलर में कैंडल्स है ये हमारी बेरिश कैंडल्स है, ठीक है। देखो थोड़ा सा पिछले लेवल पे हम चले जाते हैं, जैसे देखो ये देखो यहाँ पे स्टॉक, इस लेवल पे स्टॉक जो है मतलब काफी इसमें बुलिशनेस थी, एक बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ, बायर्स इंटरेस्टेड थे स्टॉक में, तो यहाँ से यहाँ तक प्राइस को ले गए, मतलब इस रेंज, ठीक है। तो जब भी आपको कोई छोटे मोटे रेंजेस मिल जाते हैं ना, तो उस रेंज पे आप थोड़ा सा फोकस करिए, डेफिनेटली वो किसी साइड के लिए ब्रेक होगा, ठीक है। तो वहां से आप उसको पकड़ना है, उसको आपको वहां से उसको पकड़ना होगा, राइट। तो आप देखो यहाँ से जैसे ऊपर चला गया, ठीक है। सो एक बार क्या होता है जब स्टॉक ऊपर भाग गया, मतलब कुछ लोगों ने यहाँ पे इतना, लेट मी चेक लेवल 539 40 लेटेस्ट से के 40 से ऊपर भाग गया, स्टॉक चला गया है 556 और सो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है, ठीक है। तो जिन लोगों ने मतलब यहाँ से बाई किया था वो लोगों ने अपने प्रॉफिट लेके निकल गए, और फिर फ्रेश बाइंग हुई नहीं, तो स्टॉक गिर गया, स्टॉक की प्राइस में फॉल आ गया, राइट। और फिर से यहाँ पे थोड़ा सा एक हल्का सा, आई थिंक हाँ ये 1 डे का तो ऐसे ही रहा, ठीक है, ये 1 डे का इतना ही है, 27 को ऐसे मूवमेंट दिया, बस इतना ही मूवमेंट दिया स्टॉक ने, ठीक है। तो कभी ऐसा होता है, तो ये चीजों को आपको समझना पड़ेगा। बाकी मैं बोलूंगा कि एकदम से मैंने चीज बता दी तो एकदम से आपको समझ में नहीं आएगी चीजें, क्योंकि बहुत सी चीजें हमें इसको देखनी पड़ेगी, राइट। और कोई क्वेरी है सर, और किसी की कोई क्वेरीज आप पूछ सकते हैं। इस सेशन के ही पर्पज है कि जो मैं 1 ईयर प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा हूँ, वो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, राइट। तो इस प्रोग्राम के थ्रू में जो है जितने भी हमारे जो है ऑल ओवर इंडिया लेवल में बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं, ये प्रोग्राम स्पेशली उन लोगों के लिए कि जो मार्केट में आना चाहते हैं या आ चुके हैं, बट उनको मार्केट की एबीसी कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। और मैंने देखो एक मैसेज दिया था ग्रुप में कि आई माय फोकस इज मोस्टली न्यूबीज। व्हाई न्यूबीज? बिकॉज यू नो एक फ्रेश माइंड को कोई चीज सिखाना बहुत ईजी है,
compared to a person who knows a few things which are not required to make profit from the market. सो उनके मतलब क्या ना, मैं ये बोलूंगा कि उनके पास बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, हो सकता है कि वो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन वो क्या होता है उनके ब्रेन में एक समझो क्या बोलेंगे, एक ऐसा नॉलेज पड़ा हुआ है मे बी कि वो नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है मार्केट से प्रॉफिट लेने के लिए, ठीक है। तो वो डिफरेंट चीजें अपने अपने से ट्राई करता जाता है, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज और डिफरेंट चीजों पे लोग फोकस करते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो प्रॉफिट नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें हमें कुछ चीजें, देखो सिंपल मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपको आपकी लर्निंग बहुत सिंपल और क्लियर चाहिए, आपको एक राइट नॉलेज मिलना चाहिए, ओके, ऐसा नॉलेज जिससे आपको प्रॉफिट हो, राइट। लेकिन हमें उसके लिए प्रॉफिट लेने के लिए हमें बहुत सारी चीजों में फोकस करने की नीड नहीं है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, मतलब वो कोई इंडिकेटर्स भी यूज कर रहे हैं, कोई डिफरेंट चीजें वो देख रहे हैं, मतलब वो ये देख रहे हैं कि मतलब क्या SGX निफ्टी क्या है, आज कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। बहुत सी चीजें अननेसेसरी चीजें लोग देखे जा रहे हैं, डेली चार्ट में क्या हो रहा है, 15 मिनट के चार्ट में क्या हो रहा है, ओके, आवली चार्ट पे क्या हो रहा है, तो आप डिसीजन कैसे ले पाओगे, ठीक है। बहुत सी चीजें, मतलब मैं कहूंगा कि बहुत सारे लोग तो इंडिकेटर बेस्ड जैसे ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंडिकेटर का यूज हम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इंडिकेटर जैसे उसका नाम है इंडिकेटर, वो जस्ट इंडिकेट कर सकता है, ठीक है। किसी कोई चीज हो रही है या हुई है तो उसको वो बता सकते हैं कि ये हो गया है, ठीक है। अब ये देखो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से RSI को अगर हम देखें तो RSI में कैसे फॉल आया है, ठीक है। लेकिन अगर हम स्टॉक में देखें तो स्टॉक में भी डेफिनेटली थोड़ा सा फॉल आया हुआ है, ठीक है। एक मिनट चेक करते हैं, 605, 590, 605 से यहाँ पे चेंज हुआ, लेकिन अगर हम RSI को देखेंगे तो RSI में तो बहुत बड़ा फॉल यहाँ पे आ चुका है। तो मतलब ऐसा नहीं कि वो लोग बोलेंगे कि यहाँ से ओवर बॉट से ओवर, सॉरी ओवर, हाँ ओवर, क्या बोलते हैं, ओवरबॉट से ओवर सोल्ड रेंज में आ गया, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पे हमारे हिसाब से तो एक बहुत रेंज मार्केट, रेंज बाउंड मार्केट ये रहा है। तो बहुत सी चीजें हैं जो हमें क्या होंगी, मतलब जो हमारे माइंड में कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो रिक्वायर्ड नहीं है। एक सिंपल बात बोलूंगा, इसलिए है ना, जिन लोगों को किसी पता नहीं है वो उनको ट्रेंड करना, उनको सिखाना बहुत ईजी है। अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, परसों एक मेरे एक मतलब मेरे साथ जुड़े हुए 1 ईयर प्रोग्राम में, तो उनको मैंने एक सिंपल मैसेज किया कि भाई अगर कोई क्वेरीज है, ग्रुप में मैसेज किया था कि कोई क्वेरीज है आप मुझसे पूछिए। तो उन्होंने कुछ अपने से जो अपने मन की जो क्वेरीज है या उन्होंने कहीं से कोई चीज सीखी होगी वो मेरे से क्वेरी करना शुरू हो गए। तो उसमें मतलब क्या होता है कि वैसी क्वेरीज का क्या होता है जो हमें चीज करना ही नहीं, जो हमें रिक्वायर्ड नहीं, उस चीज पे फालतू डिस्कशन करके कोई फायदा नहीं, मैं ये समझता हूँ। तो अननेसेसरी डिस्कशन या अननेसेसरी जो है टाइम वेस्ट करना किसी चीज के ऊपर, तो वो चीजें हमें नहीं करनी, राइट। क्योंकि जो चीजें रिक्वायर्ड नहीं उसको क्यों डिस्कस करना है, ठीक है। और कोई क्वेरी है सर, किसी को कोई कुछ पूछना है? वैसे सेशन हमारा काफी एक्चुअली टेक्निकल इशू आने से काफी इसमें प्रॉब्लम आ गया, तो उससे आई थिंक बहुत से लोग चले गए होंगे। Okay, most of the people have left. There was some problem, friends. So due to some technical issue, ये हमारा सेशन आई थिंक मैं तो यही कहूँगा कि सेशन वाज फेल, बिकॉज इसमें बीच में ऐसा प्रॉब्लम आ गया था, जो लोग जुड़े थे आई थिंक वो भी चले गए, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पे सिर्फ जो है, मतलब हम लोग 3-4 लोग बैठे हैं बस, दुष्यंत जी है, माली जी और ऋषि सर, ये मेरे मतलब सारे हैं, ठीक है, ऑलरेडी इस फील्ड में मार्केट के उस्ताद हैं। तो अभी हमारे साथ कोई जुड़ा नहीं, आई थिंक कोई यहाँ पे जुड़ा ही नहीं रहता है, मेरे को एक बार चेक करने दीजिए, क्योंकि जो लोग जुड़े थे आई थिंक वो जो हमारा सेशन में फेलियर हुआ उससे वो लोग चले गए।
अभी कोई भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। एक बार मैं फिर से जाके देखता हूँ जो हमारा ब्रॉडकास्ट हो रहा है। फ्रेंड्स, आप मुझे गो टू मीटिंग पे जो है कांटेक्ट कीजिए, जो भी लोग जुड़े हैं अभी, प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन गो टू मीटिंग, ओके। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है सर, देयर इज नथिंग टू डू विद ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का कोई रोल नहीं। आशीष जी पूछ रहे हैं कि जो मैंने एक मैंने वो जस्ट एक दिखाया था कि वो, सॉरी, तो वो जो मैं वहां पे आपको दिखा रहा था उसका कोई हमारे साथ उसका रिलेशन, मतलब कि वो आप जो वो मैंने जस्ट एक दिखाया था कि कैसे हम स्टॉक को, कभी हमें ऐसा स्टॉक रेंज में, मोस्ट ऑफ द टाइम देखो स्टॉक्स रेंज में होते हैं, तो जब भी कोई स्टॉक रेंज में रहता है ना तो उसको आप उस रेंज को पकड़ लीजिए, ठीक है। उस रेंज को पकड़िए और उसका वॉच कीजिए, और रेंज किसी भी साइड ब्रेक हो सकता है और देन एक अच्छा मूव आएगा, देखो। तो इसमें टाइम फ्रेम का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, मतलब कि जैसे अगर इंटरडे पे हम कर रहे हैं तो हमारा इंटरडे के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम चार्ट हो सकता है, मतलब इंटरडे के लिए जो हम लोग नॉर्मली करते हैं वो 5 मिनट्स टू क्या बोलते हैं 15 मिनट्स के हमारा रह सकता है। एक मिनट मुझे एरो लेने दीजिए, 5 to 15 मिनट्स। तो ये देखिए, ये रेंज जैसे ब्रेक हुआ सो एक स्ट्रॉन्ग अप मूव है, ठीक है। तो ये होता है एक स्टॉक को राइट टाइम पे क्या करना, मतलब वॉच करना। आप चार्ट्स को वॉच करते चाहिए, स्टॉक्स को उनको क्या करते चाहिए, बल्कि उनका रेंज नोट करते चाहिए। जैसे वो सिंपल है, यहाँ से स्टॉक आया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा फॉल, कोई यहाँ से शॉर्ट भी कर सकता था, ऐसी बात नहीं, थोड़ा सा मूव यहाँ से दिया इसने 604.5 के राउंड और 592, तो ये एक अच्छा मूव यहाँ से भी दिया। लेकिन ये कब का है, ये पिछले दिन का है एक्चुअली, ये 6 का है। तो मैं कुछ दिन की रेंज की बात कर रहा हूँ कि कुछ दिन ये स्टॉक रेंज में था, ठीक है। कल भी बहुत नैरो रेंज में स्टॉक रहा है, कल मतलब पिछले फ्राइडे को था, कल मीन्स फ्राइडे, पिछले मैं सेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको चार्ट उसी दिन का चार्ट मिलेगा जिस दिन मार्केट होगा। 8th के बाद डायरेक्ट यहाँ पे 11th दिख रहा है, तो मतलब बीच में छुट्टी वाला तो कोई चार्ट होगा नहीं, क्योंकि उस दिन मार्केट में कुछ काम नहीं हुआ है। स्टॉक अच्छा मूव किया था इसने, ओके। लेकिन यहाँ पे आप देखो बिल्कुल एक छोटे से रेंज में है। अगर मैं इस रेंज को भी एक सर्कल में, सॉरी, चैनल में डालता हूँ, रेंज के अंदर एक रेंज बना हुआ है, और उस रेंज के बाद सुबह आप देखो, जब तक बाय द टाइम में स्टॉक को नोटिस कर लेता तब तक स्टॉक कुछ मूव कर गया था, ठीक है। और इमीडिएटली मॉर्निंग में हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, एटलीस्ट हमें 9:30 तक तो मार्केट में वेट करना होगा, एटलीस्ट 9:30, ठीक है। सुबह 9:30 तक आप मार्केट में वेट करिए और उसके बाद आप कोई डिसीजन लीजिए। 9:30 तक आप वेट कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कुछ अच्छा मूव मिलता है देन आप उसमें एंटर करिए। तो ये चीज मैं कहना चाह रहा था, ठीक है। आई होप ये बात सबको समझ में आई होगी। तो मैंने देखो एक चैनल के अंदर एक और चैनल बना डाला, ठीक है, क्योंकि पिछले दिन का है। तो नॉर्मली आप एक चीज और नोट करिए, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, एक ऐसा सेटअप होता है कि अगर एक स्टॉक एक दिन किसी रेंज में रहा है, ठीक है, एक दिन अगर वो रेंज में है ना, बिल्कुल आप देख सकते हो एक दिन बिल्कुल रेंज में था ये, ठीक है। बिगिनिंग में थोड़ा सा मूव दिया था, उसके बाद स्टॉक बिल्कुल रेंज में आ गया। तो आज का स्टॉक में देखो इमीडिएटली वो रेंज ब्रेक करते ही फर्स्ट कैंडल उसने वो रेंज ब्रेक किया, और देन सो फर्स्ट कैंडल में बाइंग कभी भी अलाउड नहीं है, क्योंकि देखो ये बहुत रिस्की हो सकता है न्यू बीज के लिए, नए लोगों के लिए स्पेशली, हम लोग भी अवॉइड करते हैं। सो जनरली हम 9:30 के बाद मार्केट में एंटर करते हैं। तो 9:30 तक क्या होता है, ये दो कैंडल्स बन गए, ठीक है। अब ये दो कैंडल के जो हाई बनाया है, तो उसके बाद दो कैंडल डाउन में भी बने, ठीक है, दो कैंडल आप देख सकते हैं डाउन में बने, ठीक है। तो इसका रेंज का मैंने जो हाई लिया था वो, हाँ वो मैं थोड़ा सा इसको दिखाऊंगा, 604 था ये। तो 604 के ऊपर मैंने बाइंग बोला था, देखिए आप देख सकते हो 604, क्योंकि ये रेंज बना है, अगर इसको स्टॉक को चलना होगा तो इस रेंज को क्रॉस करके ये दौड़ जाएगा, ठीक है। तो यही हुआ, ठीक है।
आज तो वैसे बहुत सारे स्टॉक्स चले, मैं ऐसा नहीं कहूंगा यही चला है, बहुत सारे स्टॉक्स में आज मूवमेंट आई है, बट आपको डेली स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपको स्टॉक्स को पकड़ना होगा, राइट। आप पिछले दिन अगर आपको कोई स्टॉक रेंज बाउंड मिल रहा है, उसको डेफिनेटली आप नेक्स्ट डे के लिए कंसिडर कर सकते हैं। आशीष जी क्लियर है सर? कोई डाउट और? ओके सर, नो नो इश्यू सर, माय प्लेजर। सो एक्चुअली इस सेशन का जो मेरा जो वेबिनार कंडक्ट करने का एक ही पर्पज है फ्रेंड्स, क्योंकि जो मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रखा है, 1 ईयर प्रोफेशनल ट्रेडर प्रोग्राम, तो बहुत से लोगों के इसमें क्वेरीज हैं कि ये प्रोग्राम कैसे होगा, ये कैसे चलेगा, कैसे इसका हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं, कौन कौन जुड़ सकते हैं। तो सिंपल है, इस प्रोग्राम में कोई भी जुड़ सकता है, एनीबडी कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम एनी टाइम। ओके, देयर इज नो लिमिटेशन, आप इसमें कभी भी जुड़िए। मैं इसमें आपको टाइम टू टाइम डिफरेंट लेसन्स क्या होगा प्रोवाइड करूंगा, राइट। और कुछ वीडियोस भी मैं बना रहा हूँ, आप वो वीडियोस आपको कहीं नहीं मिलेंगे, राइट। वो वीडियोस यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो चीजें जो नॉलेज में मतलब कि जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे मैं उनके साथ शेयर करूंगा, मैं वो नॉलेज किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, राइट। तो वो चीजें मैं उन्हीं लोगों को दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको वीडियोस भी बनाऊंगा, लेकिन वो वीडियोस आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, राइट। यूट्यूब में टाइम टाइम कुछ वीडियोस मैं डालूंगा, बट जो 1 ईयर प्रोफेशनल जो लोग सीरीज सीखना चाहते हैं, तो वो उन्हीं लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, और जो प्रोग्राम हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ चल रहा है, तो वहीं पे वो चीजें मिलेंगी। ठीक है, वहां पे ऑलरेडी मैंने कुछ लेसन शेयर करे जो बिल्कुल एक बेसिक लेवल का है, कोई बहुत बड़ा हमने वहां पे मैंने चीजें नहीं समझाई हैं। तो मैं आपको एक चीज सिंपल बोलता हूँ कि मार्केट में पैसा बनाने के लिए हमें बहुत बड़ी चीजों की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो सिंपल हमारी लर्निंग परफेक्ट राइट नॉलेज जिसको बोलते हैं, मैं इसलिए आपको मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि राइट नॉलेज। बहुत सारे लोगों के पास डिफरेंट स्ट्रैटेजीज और डिफरेंट कंसेप्ट लेके लोग आते हैं, लेकिन वो चीजें काम नहीं करेंगे मार्केट में। ठीक है, आपको एक आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या चीज हम कर रहे हैं, ठीक है। और उसका पूरा जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही आप प्रॉपर बना सकते हो, ठीक है। सो राइट नॉलेज, इसलिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि राइट नॉलेज मीन्स राइट नॉलेज, ओके। मतलब ऐसी चीजें जो आपको रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे, ठीक है। तो आप अब देख सकते हो पिछले जैसे को बहुत से स्टॉक्स मैंने आपको दिखाए। एक बीएससी स्टॉक हमने रिसेंटली उसको ट्रेड किया था, आज भी स्टॉक ने हाई बनाया है, ठीक है, जो कि 52 वीक फ्रेश हाई बना। तो ये पिछले मतलब अप्रोक्सीमेटली ये स्टॉक 1 मंथ से हाई बनाते जा रहे हैं, 52 वीक हाई बनाते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमने के बीच में पकड़ा था, लेकिन हाँ वो एक उसका एक ब्रेकआउट हुआ था एक वीकली चार्ट पे, ठीक है, उसका ब्रेकआउट हुआ था स्टॉक का। सो तब मैंने स्टॉक को पकड़ा था, ठीक है, ओके। और वो बहुत से लोग जब मैं मेरे वो स्टॉक शेयर किया था ग्रुप में भी जो लोग जुड़े हैं, तो वो लोग उसको लेने से डर रहे थे, वो बोल रहे थे सर ये स्टॉक आपने लिया है, ये ऑलरेडी बहुत भाग चुके हैं, तो और कितना भागेगा, ठीक है। तो मैंने कहा भाई ये आप इसको ले लो, अगर आपको डर लग रहा था आप छोटी क्वांटिटी जस्ट, या आप इसको सिर्फ वॉच करो, नो नीड आपको ट्रेड करना जरूरी है, थोड़ा सा उसको देखो। वो मैंने पोजिशनल ट्रेड मतलब के लिए दिया था स्टॉक, राइट। वो स्टॉक हमने 141 से स्टॉक पकड़ा था, और मैं उसी का चार्ट खोलने जा रहा हूं, महामाया स्टील। आज बीच में उसमें एकदम से फॉल भी आया था क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, बट स्टॉक रीगेन हुआ, और अभी भी आई थिंक वो अच्छे लेवल पे है। ये देखिए ये स्टॉक यहां था पिछले दिन 180 के पास, एकदम से स्टॉक में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, बट फिर से देखो रीगेन हुआ और जबरदस्त चल गया। तो अगर मैं आपको इसको डेली चार्ट में दिखाऊंगा तो आप देख सकेंगे ये स्टॉक कैसे भागा। ये देखिए ये पूरा फरवरी मंथ स्टॉक कैसे जबरदस्त इसने अप मूव किया। सो ये होता है स्टॉक को पकड़ना सही तरीके से। और पिछला अगर आप देखिए एक रेंज में था, ये मैंने डेली चार्ट में रखा है, ठीक है। तो डेली चार्ट में अगर हम डेली चार्ट हम वैसे यूज नहीं करते, राइट। हम जनरली हायर टाइम फ्रेम में ही चार्ट को यूज करते हैं, वीकली मंथली पे, ओके। तो फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ अगर किसी ने डेली चार्ट के हिसाब से भी स्टॉक को पकड़ा होता है, ठीक है, मैं आप इसको एक चैनल पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये होता है स्टॉक को सही टाइम पे पकड़ना, ठीक है। ये एक स्टॉक में एक रेंज बना है, ये रेंज ब्रेकआउट, ये एक बिल्कुल नैरो रेंज है, ठीक है। 83 हाई और 70, तो 70 टू 83 मीन्स 10 रुपीज 10 टू 12 रुपीज का ये एक रेंज में चल रहा था स्टॉक बहुत दिनों से, राइट।
सो पिछले दिन में भी अगर हम सॉरी पिछले लेवल में भी थोड़ा जाके देखें तो आई थिंक ये काफी टाइम से उस रेंज में था स्टॉक। तो इसको कहते हैं रेंज ब्रेकआउट को पकड़ना। हाँ ये देखो उसी रेंज में स्टॉक है, स्टॉक उसी रेंज में बहुत लॉन्ग टाइम से। सो उसने एक रेंज ब्रेकआउट दिया, तो आप देख सकते हो कैसा ये चार्ट दिखाई दे रहा है। तो इस स्टॉक को जब मैंने पकड़ा था तो बहुत सारे लोग जो मेरे साथ 1 ईयर प्रोग्राम में जुड़े हैं तो वो तो ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। उनको लग रहा था कि सर पता नहीं क्या पकड़ रखे हैं, तो मतलब उनको तो डर लग रहा था। वो मेरे से बोल रहे थे सर ये आपने जो स्टॉक पकड़ा ये ऑलरेडी बहुत भाग चुके हैं। एक्चुअली हमने स्टॉक को यहाँ जाके पकड़ा था, क्योंकि कभी होता है कि स्टॉक हमारे मतलब हमारी नजर में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन मैंने इसको स्टॉक को यहाँ इस लेवल पे पकड़ा था, 140 के लेवल में पकड़ा था, क्योंकि मुझे यहाँ तब ये स्टॉक मेरे मतलब के उसमें स्टडीज में आया और तब मुझे दिखा। और राइट, तो ये यहाँ से, क्योंकि जो ये यहाँ 80 के बाद इसका जो 140 तक का जो मूवमेंट था, सो बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि स्टॉक सर ये स्टॉक अब गिरेगा। तो मैंने कहा नहीं भाई आप इसको पकड़ सकते हो 124 का। तो ये मैंने ओपन फ्री ग्रुप में टेलीग्राम चैनल में भी स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है। आप वहां पर भी चेक कर सकते हैं पिछले मैसेजेस में, और मैंने 2-3 बार इसका अपडेट भी किया है कि हमारा फर्स्ट टारगेट आ गया, सेकंड टारगेट आ गया, तो हमारा ये फाइनली टारगेट आ चुका है। अब इसके बाद ये स्टॉक कहाँ जाएगा वी डोंट केयर, ओके। बट हमारा जो प्रॉफिट था हमने इस रेंज से पकड़ा था और ये इतना टारगेट हमें दे चुका है स्टॉक, राइट। तो ये चीज है, ये स्टॉक मतलब ये मैंने टेलीग्राम चैनल में भी दिया है और व्हाट्सएप पे भी जो ग्रुप्स हैं, कुछ फ्री ग्रुप्स हैं। एक पोजिशनल ट्रेडर्स का एक फ्री ग्रुप है, यस पोजिशनल ट्रेडर्स, तो वहां पर भी ये स्टॉक दिया था, ठीक है। सो आई डोंट बिलीव कि किसी ने ये बाई किया होगा, क्योंकि बहुत से लोग जो है मतलब देखो हर एक पर्सन के पास अपनी अपनी नॉलेज है, ठीक है। उन्होंने अपने हिसाब से देखा होगा, तो इसमें हार्डली मुझे लगता है किसी ने बाई किया होगा, राइट। लेकिन ये स्टॉक को मैंने 124 का स्टॉप लॉस दिया था, तो आप देख सकते हैं कहीं पर भी 124 नहीं आया। ये स्टॉक 127 तक ही आया था एक स्टॉक। तो ये तो पॉसिबल है कि जब एक स्टॉक चल रहा है तो थोड़ा सा करेक्शन तो पॉसिबल है, तो हल्का सा यहाँ पे करेक्शन हुआ है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो इसका लो हाँ यहाँ पे लो बना है 125.45, मतलब के 125 तक आया लेकिन 124 हिट नहीं हुआ, 124 ये नहीं गया, सॉरी लो देखना पड़ेगा हमको। हाँ लो यहाँ पे 124.45, अब ये 126 एंड सो। तो ये स्टॉक 124 को ब्रेक नहीं किया, तो मैंने इसको 130 तक कलेक्ट करने के लिए बोला था कि 140 से 130 तक आप इसको बाई कर लोगे। थोड़ा सा नीचे आया था एक दिन, ठीक है, और उसके बाद स्टॉक वहां से कैसे किस तरीके से ये जबरदस्त मूव किया। तो आज भी स्टॉक ने जबरदस्त मूव किया, बल्कि फ्रेश 52 वीक हाई बनाते जाए। तो ये चीजें हमें पकड़नी है, ऐसे स्टॉक्स हमें मिलने चाहिए। मॉर्निंग में ये 50 मिनट्स में खोल रहा हूं, तो इसका देखो आप सुबह स्टॉक में हल्का सा एक मतलब हल्का नहीं था, काफी बड़ा मूव, सॉरी हल्का नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि काफी मूव आई थिंक हाँ सुबह सुबह इसने हाई बनाया था 182 और सो, और देन स्टॉक 170 के रेंज में आ गया और वहां से फिर से ये रिगेन हो गया और अभी क्लोजिंग 187। सो फ्रेश हाई। अगर इसको डेली चार्ट में देखें तो ये हायर हाइज बनाते जा रहे हैं, हायर हाइज, ठीक है। लेकिन हाँ आज का वीक आप देख सकते हो काफी बड़ा है। तो अब हमारा जो है फाइनल टारगेट आ चुका है, 3 टारगेट दिए थे, तीनों टारगेट्स आई थिंक हो चुके हैं। मेरे को 1 मिनट मतलब कि हाँ इतना ही मैंने टारगेट दिया था 170-80। अभी हम इस स्टॉक को वेट करेंगे 200 लेवल तक, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, राइट। अब इस स्टॉक को अगर हम 200 लेवल तक जाता है तो 200 तक हम इसमें फ्रेश एंटर नहीं होंगे, लेकिन अभी 200 के ऊपर ये सस्टेन करता है देन हम इसमें फ्रेश एंटर होंगे, ठीक है। उसका रीजन है कि हम क्यों एंटर होंगे, ठीक है। ये देखिए ये स्टॉक है, ओके। तो ये इस लेवल के ऊपर जब इसने ब्रेकआउट दिया था मंथली चार्ट पे, मैं मंथली चार्ट दिखा रहा हूँ शॉर्ट में आपको, कि ये जब ब्रेकआउट दिया था स्टॉक ने, ये इस लेवल के ऊपर हमने इसको पकड़ा था, ठीक है। तो हमारे हिसाब से ब्रेकआउट इसका बना था यहाँ पे 117.20 या 14 समथिंग, यहाँ पे इसको ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन ब्रेकआउट के बाद भी कई बार फेक आउट्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं फेक आउट। फेक आउट मतलब स्टॉक ने थोड़ा सा मूव किया, वीक बनाई और देन डाउन। सो उस चीज को वेट करने के लिए मुझे यहाँ कुछ दिन वेट करना पड़ा कि जब ये स्टॉक एक बार 140 चला गया तो उसके बाद मैंने स्टॉक को बाइंग के लिए बोल दिया।
तो उसके बाद स्टॉक में करेक्शन हुआ हल्का सा, जो मैंने आपका भी डेली चार्ट में दिखाया था कि 125 लेवल तक भी एक बार आया, 25.45 एक्चुअली। ओके, 124 का स्टॉप लॉस दिया था, तो स्टॉक अभी जबरदस्त उसके बाद मूव किया। अब हम इस रेंज तक स्टॉक को कुछ नहीं करेंगे, सॉरी 200 तक मेरा है, 200 तक हम इसमें कुछ नहीं करेंगे स्टॉक को, ठीक है। तो 200 अगर ये क्रॉस कर जाता है और सस्टेन करता है तो देन हम इसको बाई कर लेंगे इस लेवल के लिए, 230 के लेवल के लिए। और अगर वो लेवल भी सस्टेन करता है देन फिर तो अपसाइड पॉसिबिलिटीज बहुत दूर की है इसकी, ठीक है। सो ये चीज है फ्रेंड्स, ऐसी चीजें हम आपको सिखाएंगे कि राइट नॉलेज जिसको बोलते हैं वो चीज आपको सीखने को मिलेगी। तो अगर किसी की कोई क्वेरी है आप पूछ सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, कोई किसी की क्वेरी है प्लीज पूछिए मेरे से। लेकिन थोड़ा सा बीच में सेशन में प्रॉब्लम आने से ना बहुत से लोग आई थिंक डिस्कनेक्ट हो चले हैं। आई डोंट थिंक यहाँ पे अभी, हाँ 8 पीपल आर वॉचिंग राइट नाउ। फ्रेंड्स आप मुझे गो टू मीटिंग में भी ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप वहां से डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग। यूट्यूब पे मैंने इसलिए ये किया है ताकि कोई बाद में अगर उसको देखना चाहे सेशन को तो वो देख सकते हैं, इसलिए मैंने यूट्यूब पे इसको शेयर किया था, क्योंकि वो सेशन हमारा ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है। इसलिए मैंने यूट्यूब पे भी स्टार्ट किया कि इन केस अगर कोई सेशन को बीच में बाद में देखना चाहे तो वो यहाँ से देख सकते हैं। कोमल जी पूछ रहे हैं कैन इट बी यूजफुल ऑन एंड ऑफ डे। एंड ऑफ डे देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको एंड ऑफ डे में भी आपको स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो स्टॉक को हायर हाइज बना रहे हैं या कुछ ऐसे पिछले रेंज को ब्रेक कर रहे हैं तो वो आपको ढूंढने पड़ेंगे स्टॉक्स, ठीक है, वो कर सकता है। लेकिन हाँ इंट्राडे की बात जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। कई बार मार्केट में क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है जो हमें अगर लाइव चार्ट में अगर आप देखते हैं तो उससे हमें और ज्यादा क्लियरेंस मिलती है। पिछले दिन की बहुत बार हम भी स्टडीज करते हैं लेकिन वो काम नहीं करती हमारी स्टडीज। तो ये मार्केट में बहुत सी चीजें अप एंड डाउन होते हैं, इंट्राडे का जो है ना वो डिफरेंट है। लेकिन हाँ जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, ठीक है, उनके लिए वो उनकी स्टडी एंड ऑफ डे पे ही रहेगी, ठीक है। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए हम एंड ऑफ डे पे ही स्टडी करते हैं, लेकिन हाँ इंट्राडे के लिए हमारी स्टडी जो है हम एडवांस में भी बहुत सी चीजें देखते हैं, स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। लेकिन इंट्राडे के लिए मैं ये कहूंगा कि हमें लाइव मार्केट में ही स्टॉक को देख के लेना चाहिए। जैसे कि आज का वोल्टास है, वोल्टास मेरी वॉच लिस्ट में कहीं नहीं था, सुबह मुझे सडनली दिखा स्टॉक में कुछ मूवमेंट हुआ है, ठीक है। क्योंकि हम थोड़ा सा एक होता है कि हम स्टॉक्स पे वॉच रखते हैं, कौन सा स्टॉक क्या क्या है, मेरी वॉच लिस्ट में था, ठीक है। तो मतलब कुछ कल के दिन पिछले दिन में स्टॉक में एक रेंज था, ठीक है। तो यही रेंज जब इसने ब्रेक किया तो मुझे लगा स्टॉक में कुछ हो रहा है यहाँ से, तो मुझे अब ये चीज थी कि अगर ये स्टॉक इस रेंज को क्रॉस करेगा, और बाई चांस आप देख सकते हैं कि ये रेंज पिछले लेवल, लेकिन मैंने इतना बड़ा रेंज नहीं देखा था, मैंने एक ही दिन का देखा था, एक दो दिन का ही मतलब कि इसमें नोटिस किया था। तो अगर हम इसको, मैंने एक दिन का ही वॉच किया था स्टॉक में, पिछले दिन का मूवमेंट कुछ ऐसे रहा, ओके। और यहाँ से इसने जब ये स्टॉक में मूवमेंट आया तो डेफिनेटली इसने आज मूवमेंट, मुझे लगा था कि मूवमेंट देगा, ठीक है। तो 600 का स्टॉक है, ₹6 1% टारगेट लेके हम लोग निकल गए, ठीक है। सिंपल लॉजिक, 1% प्रॉफिट लेके या उससे बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली 1% 0.9% भी लेके आप चले जाइए, ठीक है। इंट्राडे गेम है, मतलब इसमें आपको ज्यादा लालच नहीं करनी है, डिसिप्लिन चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है। ओके, हितेश सर पूछ रहे हैं डू वी हैव सर्टेन लिस्ट ऑफ स्टॉक्स टू वर्क ऑन फॉर आवर स्टडीज एंड टेकिंग ट्रेड, डू वी हैव सर्टेन लिस्ट। Sir, actually, I have kept few stocks in my watch list. Okay, so you can keep few stocks like Nifty 50 stocks, some FNO stocks. Okay, and keep watching them. Okay, did Bharti Airtel give a breakout? Yes, Bharti Airtel gave a good breakout today, but I could not catch it. Okay, so sometimes we cannot track everything. Okay, we cannot track everything. Sorry, Bharti Airtel. Sorry.
BHART. Okay, Bharti Airtel have given a very good movement. I think 6 to 7% movement. Yes, wonderful movement. But I could not catch it because we cannot catch every stock, right? And we need not to find every stock. Just go and keep watching every stock. Just find some good profitable trade, good stocks, and then see the things I am telling you. Same thing has happened here. There was a range a few days, and what after a range breakout. So look for such things. So ये आपका end of the day में काम करेगा. It will work as an end of the day study. ठीक है. So आप देख सकते हो. You can see friends, there was a range. I'm just telling you intraday range. Okay, a few days from 6, 7, 8, 3 days range, and there is a breakout, wonderful breakout, and see the movement. So we need to catch the stocks. We have to catch the stocks, and they definitely give us good movement. ठीक है. Any other query, friends? So just maintain few stocks in your watch list. We need liquid stocks for intraday. Liquid means stocks where there is easily buyers sellers are available. Means where there is more trading going on. Okay. There are few stocks where a very limited number of people trading on them, so they are illiquid stocks. We may get in trap there. What frame? I didn't watch it. Okay. I'm telling you, just I keep few stocks, and once I get those stocks, I focus on them. Okay, Mishra ji is saying RRB Infra, RLB hoga, I think. RLB Infra. Okay, sir, let me just check it. You're asking for a question whether we need, you want it for positional trading. So, friends, positional trading is a different concept, okay? Many times I tell friends that first of all, we need to find a very solid confirmation for positional trading. So he is asking about RBL, no, sorry, infra was there. I think RRB. Let me just type RRB infra. No. RBL infra or so. No. RBL Bank, okay. Mishra sir, which stock is this RRB infra? Can you name it? Is it RRB infra or something else? Yes, sir, Ashish, yes, it's possible. That's what I'm saying, that after range, we need to IRB. Okay, sir. It is IRB. That's why I got confused which infra is this. IRB infra. A stock can give a breakout either side. That's what I'm saying. We need to watch and wait for the stock to enter. Just like see here, something again, some range breakout has happened here. Look at for past 2 days break, and not even two. It is for 3-4 days in a range, and today it's given a good move. But you're asking for positional trading, so I have to study it in a higher time frame. So let us just go with daily chart. So on daily chart, stock has given a wonderful morning star formation. It's a morning star breakout on daily chart. So it has given, don't enter fresh. I think as per daily chart, we should not enter fresh. It may be a little risky. So you wait for this range to cross. It's at 154. Just wait for 10 points more, 10 to 15 points more. Let it once get stable above 170. Okay, if it sustains above 170, then you can enter for next target of 200.
but at current level I will suggest to don't enter fresh. ओके, तो आपको फ्रेश अभी एंटर नहीं करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, सो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि इट कैन फॉर्म अ डबल टॉप एंड देन शो सम करेक्शन। सो बहुत से लोग ऐसे में फंस जाएंगे, तो आपको इस लेवल के क्रॉस होने के बाद वेट करना है। अगर एक दिन ये सस्टेन करता है या मतलब उस लेवल पे जाके सस्टेन करता है तो उसके ऊपर आप बाई करोगे, लेकिन एक दिन का आप वेट करिए, इट शुड सस्टेन देयर। हाई पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी है, 200 मतलब मैं फर्स्ट टारगेट ले रहा हूँ, अगर 170 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो यू कैन गो फॉर 15 पॉइंट्स मूव, 200 rupees target, first target 200 rupees because there is a range. Okay, sustaining about that, next range could be 240 and then 270 also. Okay, 70 75 also. So don't just bust buy immediately. You need to wait. Let me just check in high time frame. So friends, try to make a habit of reading the charts. See, overall chart is this. Stock has not given good returns, I could say. There was some zigzag movements, and after quite a long time range, stock has gone down. Okay, now it needs time to, just like it has happened something here, so maybe it could not cross this range of 170 75, and so we have to wait. Don't enter fresh, don't enter fresh. Yeah, there is a big resistance level. 168.70 is a big resistance level. So stock has a limited upside. If it could not cross this level, it may show some correction. Okay. So I will suggest at this time, it's not the right time to enter. As per daily chart, I have shown you, there was a morning star pattern. Okay. So that worked wonderfully and it has given a wonderful move. So one could have bought above this level, 124 and 154. Even 120, one could have bought above 120 with a stop loss 110. So means just 10-15 point stop loss, and it given a good move today. But see, 2 days back, 3 days back, it has given some confusion situation. Okay. So at this point of time, I would suggest don't enter fresh. It has to cross this level of 170. So till 170, once crossed and closed above 170, we can enter for 200. Okay, and you can keep stop loss of this range, 150, 155 as well. This range stop loss, go for 200. Positional trading works on different things, friends. I'm just telling one thing, okay. But actually, position trading, we see many things there. Any other query, friends? Okay, sir. Okay, you may go, sir. Okay. So आप तो जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप वहां पे फोकस करिए, जो भी मैं लेसन शेयर कर रहा हूँ आप उस पर फोकस करिए। चार्ट्स में कोई प्रॉब्लम आता है वो हम कभी सेशन कंडक्ट करेंगे, गो टू मीटिंग के थ्रू हम सेशन करेंगे जहां पे आप लाइव डिस्कस कर सकेंगे, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। हितेश 1 minute, what will stop loss for shipping corporation? How to use RSI with charts? Friends, RSI, see, let me just clear you, okay. RSI cannot, tell you when to, we can say, just looking at RSI, we cannot decide a stock to buy or sell, okay. Because I'm telling you that these things are just indicators, they can just help us, okay. But we should never trade based on indicators purely. We need to understand the levels on the chart, okay. So we have to understand some price levels, some candle formation, some reversal points. Those things are important. Just looking at RSI, I have made few videos on RSI indicator also. So we can make use of RSI 50 level. Okay, if a stock crosses above 50 level of RSI,
So above 50 level we can buy. So we can use this technique in intraday as well, that one stock crosses above 50 level. Let me just show with 15 minutes time frame, and let me show you the how this thing works. So means once a stock is above 50 level of RSI, see here 50 level, it's 51 actually. I am putting a line there, so I hope everybody could see this line. Made the line red. Okay. See what happened after this RSI was moved up. So see the movement. Okay. But totally based on RSI, you would say that you will make some investment or anything? No. Yes, sometimes we take these things in consideration, just like in higher time frames and weekly chart, monthly charts. If some stock has, see, look at this. This stock has given, this is our IR infra. Okay. So look at this. It has gone below, lower level of the RSI. It came to 20 level, and then stock has given some movement also. So any such level we can get in some higher time frame. We can make use of these things. Okay, we can just get to know that stock has, it has came to a oversold level. Okay, so possibly it can give some up move, but see, once it gone there and then fall. So it just touched 50 and fall again. Now it is again near 50, so it may again fall, or maybe it crosses 50 and go above. But totally we cannot rely on indicators. Okay. But one thing I am telling you, that we can make use of 50 level of RSI. Okay, or we can make lower levels and upper level. Means when at lower level we need to keep a watch whether stocks just give a movement above that level, then we can enter. Just like look at this level. Means one stock has gone below this 30 level of RSI. So then after we need to be, just put it in watch list. See, it was at this point that when it crossed below this 175 range, and it remained, it gone from 175 to 115, but stock could not reverse. After this level, stock has shown reversal, but again a fall. So totally looking at, these things, we cannot make profit. We cannot totally rely on indicators. In engulfing is body, engulfing is important, or total high and low. Engulfing is, sir, mostly, generally it should be, main body. Okay, main body should be covered, but it's better if it covers the, shadows as well. That would be much better. What should be volume? Sir, many people use volume, but I have never studied volume. And see, I have a simple understanding that once a stock gives an up move, volume is created itself. It shows volume candles itself. Let me just put in a volume indicator. See here. So we cannot decide based on volumes. But yeah, volume is one thing. Okay. Right. So you will normally see these things are already done. Volume will be formed later. Okay. So volume cannot just tell you what will be the next candle of the volume. Okay. One volume, see this, there is a volume. Okay. See next candle, but it will be appeared after this thing has happened. Okay. So we cannot totally make a decision based on volumes also. See, here was a good volume, stock gone up. What next? Okay, stock has fallen down. Okay, so one would have entered at this level, looking there is a big volume, there's a huge volume. Okay, even at this point, huge volume was there, but then after stock has gone down. So totally based on volume, we cannot take a decision. I am saying indicators cannot give us full picture. Okay. Simply, Komalji, Nifty 50 stocks, just like you can go on an SE site. Let me just go there. Okay, we can select stocks, which all stocks are, liquid. So you can just keep some stocks.
Simply looking at some stocks where there are very limited number of buyers and sellers. And one more thing, if you want to buy in them those stocks on leverage, so you cannot buy in them big leverage. Okay, so that will decide whether the stock is liquid or not. See, we are on NSE website. This is www.nseindia.com. So we gone there. Okay, now we will go in this page, and from here we will look at. So we can find there, different stocks. Like 1 minute. Let us go to equity stocks. So normally, Nifty 50 stocks, and there are some liquid stocks also. Liquid 50 net. So the Nifty 50, Nifty next 50. Okay, these stocks are liquid actually. 1 minute. Then we have, yes. So you can check Nifty 100 liquid 15. So you will find some stocks which are liquid. Then Nifty 50, Nifty mid cap 50 liquid 15. So you can pick these stocks and keep in your watch list. Let us just go there. Liquid stocks mean the stocks where there is daily basis huge, buying and selling happening. Okay. So means those stocks where there are always you will find a buyer and seller. So means you will not get stuck there. Some stocks are there you will not get. And secondly, I told you one more thing, that you cannot work on big leverage in those stocks which are not liquid. Means they will not give you access to buy leverage. Okay, on intraday basis. So that criteria, if you check that if you want to buy in more quantity, okay, then you have the capital you have. Okay, so that will decide whether the stock is liquid or not. Simple, that criteria. So you can check all these stocks are liquid. Okay, so these are liquid Nifty 100 liquid 15 stocks. So you can keep these stocks in your watch list. Okay, so just like I have done, I keep some stocks in watch list as per my criteria. I generally, I tell you that I don't trade. Normally, I don't trade stocks below 300 in an intraday basis. Okay, and upside, I don't go for stocks above 2000. So I have made some criteria that I will trade from stocks in the range of 500 to 2000. Okay, 1000, 1500. So that is my own decision that I will trade in those stocks. Any other queries, friends? Friends, you can ask your queries if there is any query. Any question regarding 1 year program? Because the main issue, main thing that why I am conducting this session is to clear your queries regarding the program. Because this is a purely offline program where I will make few lessons from time to time, and I will give you sufficient time for a topic to be covered. At least I will give, if I share some stocks at the weekends, let us say 2 or 3 lessons maximum in a weekend. Okay, so you will get 4 to 5 days to complete those topics. And once we complete those topics, then after I will give some activities also, or I will show some stocks related to those stocks, and I will share that study in groups also with charts and examples. So it's a practical training so that everybody can understand the things. You can keep any number of stocks. Okay, if I tell you, I have around about 150 stocks, 100 150 stocks. So I just go on through them once.
which all stocks have moved in intraday basis 1% or more, either side, buy side, sell side. I keep just go and check the charts immediately in 5 minutes time frame, and anywhere then I enter. Yes, sir. It will cover everything, sir. Yes. It will, first of all, we will start from, we can say, basics of the candles. Okay. Then some candlesticks. Right. Then after we will move to, some chart formations. Okay. And slowly we will move to fundamental analysis, then, option chain reading. Okay. And I will, from time to time, I will give you practice. And I will show you the, how the things work. Okay. So it's a practical trading program so that everybody can learn right knowledge. Okay, sir, you're part of the group. Okay. So you might have seen Ashish ji. Is there any doubt in my, what I have shown you? Is that, have you seen the power of the teachings? I have just given few lessons. Okay. And if I would say, if somebody follow those things with discipline, so that knowledge will definitely give an, profit to a new trader. Friends, okay, there are many people talking of GAN, elite, and harmonics. Okay, yes, many people are there, but I have never checked these things. I don't know GAN, I don't know elite, and I don't know harmonics. I know nothing about any of these things. No need. As of GAN, I will simply tell many people are fooling, small people. Okay, on the name of GAN teaching. Okay, there is some question. 1 minute. Where was the question reflected? सर सर मैं नहीं सर, वो मैं सेशन ऐसे करूंगा सर, अभी नहीं, मैं रिकॉर्डिंग नहीं बना रहा हूँ उसका, रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा उसका, वो मैं करूंगा तो वो मतलब ऐसे में शेयर नहीं करूंगा, ठीक है। वैसे रिकॉर्डिंग्स नहीं है, मैं लेसन्स बनाता हूँ और वही मैं शेयर करता हूँ, मोस्टली मैं लेसन्स बनाता हूँ, ठीक है। What topics will we cover and will you also extract the list of stocks in buying? कोमल जी, आप कौन से स्टॉक्स की बात की? मैं, हाँ, मैं आपको जैसे नहीं, देखो टाइम टू टाइम अगर हमारे पास स्टॉक्स कोई आते हैं इंट्राडे के लिए, मैंने आपको समझाया था एनएससी के जैसे ना, आप एफएनओ स्टॉक्स ले सकते हो, और वो आप एक क्राइटेरिया बना लीजिए, मेक योर क्राइटेरिया दैट यू विल, आपको एक पता होना चाहिए कि आपके कौन से स्टॉक्स में कंफर्टेबली ट्रेड कर सकते हो। आप उसके हिसाब से, उस प्राइस के हिसाब से आप स्टॉक्स में, किस प्राइस के हिसाब से आप स्टॉक्स में ट्रेड करने में कंफर्टेबल हो, उसके हिसाब से अपने स्टॉक्स में, सॉरी, लिस्ट में कुछ स्टॉक्स रखिए, ठीक है। और उन स्टॉक्स को ट्रैक कीजिए डेली बेसिस पे, उनके चार्ट देखिए, जैसे मार्केट खुलता है, अगर आप इंटरडे की बात कर रहे हो, मैं इंटरडे के लिए बता रहा हूँ, तो सुबह मॉर्निंग में देखो, इंटरडे ट्रेडिंग के लिए हमें कोई प्रीवियस ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, उसी दिन का हम, प्रेजेंट डे का हम देख लेंगे और चार्ट को देख के हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। कुछ कैलकुलेशंस में बताऊंगा, ठीक है, वो प्रोग्राम के थ्रू में बताऊंगा, कुछ कैलकुलेशन भी हम करते हैं, ठीक है, तो वो कैलकुलेशन बेसिस पे भी हम लोग देखेंगे, लेकिन वो थोड़ा हाई लेवल में, एडवांस लेवल में जब जाएंगे तब हम बताएंगे, ठीक है, अभी नहीं। तो आप अपने एक डिसाइड कीजिए कि आप कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करने में कंफर्टेबल है। विप्रो, ओके, अभी देखो, एवरी आईटी स्टॉक इज डाउन, ओके, सो आईटी पूरा ही डाउन चल रहा है, राइट। तो आईटी, क्योंकि अभी देखो, एक मिनट, अगर मैं विप्रो का देखता हूं, मुझे देखना पड़ेगा, विप्रो काफी गिरा हुआ है पिछले दिन से, सॉरी, पिछले कुछ टाइम से। तो विप्रो अगर 240 के लेवल में आ जाता तो अट्रैक्टिव हो जाता बाइक के लिए। अभी थोड़ा सा इसमें और करेक्शन बाकी है मेरे हिसाब से, मतलब कि अभी ये देखो ऑलरेडी टॉप से विप्रो देखो ऑल टाइम हाई रह चुका है स्टॉक, अभी थोड़ा सा तो करेक्शन पॉसिबल है कि नहीं। सिंपल देखो, आपको मैं एक बात बताता हूँ,
बहुत सारे लोग ना, कुछ लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा, 285 पे भी बाई किया होगा। सो दिस थिंग इज डेंजरस। अगर आप चोटी पे पकड़ रहे हो ना स्टॉक, सो वो नहीं, हमें बॉटम पे ढूंढना स्टॉक को, यहाँ बॉटम पे, इधर इधर ऐसे, यहाँ यहाँ आएगा तो आप बाई करना थोड़ा सा शुरू कर सकते हो, ठीक है। कभी भी टॉप पे नहीं पकड़ना स्टॉक्स को, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्टॉक वो टॉप नहीं बना सकता है, बट आपको कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। ऑलरेडी स्टॉक जो है लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, आई थिंक, लेट मी जस्ट, यस। सो ये देखो, अभी ये मैंने पूरा मंथली चार्ट रखा है, एक मिनट, पूरा इसको मैं, yes, this is monthly chart of the Wipro. So stay away, simply stay away from this stock now for positional traders. All those who are holding, they should book their profit and exit. Okay, if you have some capacity, then you can, average out, but it's not always, it doesn't work. And when you buy from top से buying में averaging concept काम नहीं करेगा. Look at the monthly chart of the stock. अभी इतना करेक्शन देखो, ऑल टाइम हाई ये चल रहा था, जब मार्केट गिर रहा था स्टॉक चल रहा था, अभी मार्केट चल रहा है स्टॉक गिरेगा, तो मतलब ऐसा कभी होगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइकिल ऑफ द मार्केट साइकिल्स। ओके, तो लुक एट अ मंथली चार्ट, आई एम शोइंग यू मंथली चार्ट, आरएसआई इज क्लियरली इंडिकेटिंग डाउन। सो यहाँ पे आरएसआई हमें थोड़ा सा हेल्प कर रहा है, ये बता रहा है स्टॉक सीधा देखो, इसका एक डाउनवर्ड, एक डायरेक्शन अभी भी डाउनवर्ड दिखा रहा है, और नीचे जा सकते हैं। अगर हम वीकली चार्ट में देखेंगे, सो 200 के राउंड ये अट्रैक्टिव हो जाएगा स्टॉक, 200 के राउंड, 200 के आसपास जब आएगा, देन यू कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग दिस एज अ, आई एम टॉकिंग एज अ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर्स। Those who are already having it from low levels, they should take the profit. क्योंकि ये स्टॉक, विप्रो का स्टॉक ऐसा था, जब सभी स्टॉक चल रहे थे, सॉरी मतलब गिर रहे थे, तो ये स्टॉक चल रहा था, ये हायर हाई बनाया जा रहा था। ये मंथली चार्ट में दिखा रहा हूँ आपको, सॉरी वीकली दिस टाइम। सो अभी कुछ तो करेक्शन पॉसिबल है। आप देखो, एक चीज और नोट करिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता रहा हूँ, ये देखो स्टॉक में क्या हुआ है, स्प्लिट हुआ है यहाँ पे। तो स्प्लिट होने से भी कई बार स्टॉक्स गिरते हैं, या कभी डिविडेंड्स पे करते हैं, तो उसके बाद स्टॉक्स में नॉर्मली मैंने देखा है स्टॉक्स में कुछ करेक्शन आती है। तो ये स्प्लिट हुआ है 1.3 के रेशियो में बोल रहा है ये, तो एक मिनट, स्प्लिट डेट बता रहा है कब का है, 6 मार्च को स्प्लिट हुआ है। ओके, स्प्लिट हुआ है। ओके, सो इसको मैं एडवाइस नहीं करूंगा आप इसको बाय करिए, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी टॉप पे था, टॉप पे है, तो कुछ तो करेक्शन दिखाएगा। ये एक रेंज में आ रहा है, अगर इस रेंज में आपको मिल जाता है तो यहां से आप एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हो, इस रेंज के आसपास मिल जाए करने की सोच सकते हो, बट any other queries, friends? Neerja, is this question clear? Wipro, regarding Wipro, do you have Wipro in your portfolio? Yes, Komal ji asking. Yes, we. I will give some task, and you will check them and reply. Don't go with stocks at top. Try to find stocks at bottom. If you are a positional trader or investor. And there, this RSI can help little there. See, in this case, RSI can be little helpful. See, from this point of time, RSI was gone above 70. It was giving an indication that stock can show some correction. So see, something similar has happened in past also. Look at this level. Look at this level. So stock has shown some correction, but it's a minor correction actually. Now it has, its price has fallen because of the split.
Okay, so sometimes stocks split and their prices fall. So those who are holding them, they have got it in the ratio 1 is to 1.3 is to 1 ratio. Okay, I mean they have given some split in this ratio, 1.33 is to 1. Shipping Corporation. Okay, do you have it in portfolio? I am holding with from 90. Please stop loss. Okay, Shipping Corporation. Okay, Shipping Corporation is at right value. Okay, you can buy it. You can average it. No need to put a stop loss. 1 minute. Let me just study its monthly chart. It's at a good value level. Okay, it's a value buying. Okay, you can buy. I would say go with it. And as if you want a stop loss, so you can keep stop loss at the low of this previous, this range low. That is, sorry, it is 38. You're saying 90. I am holding from? You're holding from 90. Okay, from 90 you're holding and it has gone till, let me check, 38. Okay, don't do such things. Okay, you have picked up top. Yes, you're saying you have taken it from top and now it's 38. So that's a blunder. Okay, that's a blunder you did. So I'm telling you that don't do such things. आपको ये चीज नहीं करना है, आपको टॉप पे नहीं पकड़ना, वही मैं बार बार बोल रहा हूँ स्टॉक को, क्या है, स्टॉक्स एट बॉटम. Okay, now this is the time you can start accumulating it. And if you have it, so you can average it out. Let me just study in deep so that, yes, you can average out little bit. Okay, if you have scope to average out, you can just average out so that your price come to somewhere. If you're holding from 90, so your price should come somewhere 60 or so. So just go on averaging. Okay, so its first possibility is somewhere around 50. 50 level will be first resistance for this stock. It will be difficult, so don't do such mistakes, friends. You're holding it from 90 level, you have taken it from 90. So see, where is 90? You're holding from some this level. So the level I'm telling you at the top, you have taken at the top, and see the condition. It's gone down to this level now. So never try to catch a stock at top. You can think of buying a stock at bottom, provided there is a previous level. So I've just shown you there is a previous level. So this is a previous level. Let me just make a trend line. I think it has given a trend line breakout also. So it has breakdown trend line. Okay, it is at support level. So you can average out it. Okay, average out. You can keep a, there is no need to keep a stop loss. If you are in, you can hold with some patience. You can just average out. But you need to average it out so that your price, your buying average price should come somewhere around, means it should decrease from 90. Okay, how much quantity do you have it? What is the quantity? Neeraj, what is the quantity you are holding it? Always I have told you, you're part of the 1 year program, so you must know how we should average out. I have told you. Okay, you're holding for many years. Okay, 150 quantity. Okay,
Do you remember in which year you have bought it? Because I opened monthly chart. So definitely it is down from maybe let us just check. I don't know when you have bought it, in which year, but now it is at the right time. Now you can average it out, and stock will definitely give up move. At least first target would be 50, I would say. First target is 50. You can check there is a level, 50 level. Sorry, this is a 50 level. This is immediate target. Okay, possible in few days or maybe in months. It depends. But it's already at a level where we can buy, and we will see buying in this stock now. Okay, it has touched a trend line. You can see I've drawn a trend line. Don't consider this is an simple trend line. It's a trend line on the monthly chart. Okay, so it's at a very good level now. Okay, you can accumulate this stock now. You can just add on little more if you have scope, and try to take some benefit at 50 level. Once if you buy something, so take some profit at 50, 60 level. If it sustains there, you can keep some quantity for the for means for but currently you're in a situation you're already holding some quantity. I don't know how much capital you have you have, and you have decided to put on this stock. So you need to, I have explained how to average out. Okay, okay, no need. Currently it's at a good level. Okay, Hitesh is saying which stock can be gifted to kids at least for 10 years. Okay, Hitesh, it's a big question for her. You can just, I tell you, just go for some stocks, but the stock, we should see the fundamental of the company. Okay, we have to study the fundamentals. No, 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 never go with SBI. Stay away from public, sorry, this, yeah, public sector banks. Strictly stay away. You can go with Federal Bank. Ashok Leyland currently at good level. Okay. You can buy Tata Motors, sir. Go and buy Tata Motors. Go and averaging it just like SIP. Buy in small quantity every month. But you need to understand, we have to put some stocks in our watch list. Sorry, portfolio. You must have 10 to 20 stocks. Okay, so at current level, I can say you that you can buy Ashok Leyland and Tata Motors. Okay, currently you can buy these stocks. Even M&M also, you can put some. Yeah, if you have some money, you can buy Maruti Suzuki. Go and buy. Yeah, Maruti is best for 10 years. If you want that's a gift from my side. Go and buy Maruti Suzuki. Every month you can afford to buy some. You can say one stock also, because stock is up somewhere around 7,000 currently. So after 10 years, it will be crossing. We can say 20,000 or more. Go and buy Maruti Suzuki. Okay. But always remember, we should, we must have some stocks in our portfolio. Don't just depend on one single, horse. आपके एक घोड़े पे आप दाव नहीं लगा सकते हो. आपके पास 10 से 20 स्टॉक्स होने चाहिए. ठीक है. Hitesh sir, is the query clear? But don't go with SBI. Okay, I will strictly stay away from public sector banks. You can go with private sector banks, but not with public sector banks. Hitesh sir, any other query? Is your doubt clear? आपने बच्चों के लिए गिफ्ट मांगा था, मैंने आपको दे दिया सर. आप टाटा मोटर बाई कीजिए, आप मारुति सुजुकी बाई कीजिए, M&M भी आप थोड़ा सा डाल सकते हो. उसके बाद आप फेडरल बैंक डाल सकते हो, अशोक लेलैंड डाल सकते हो. आपके पास कम से कम 10-20 स्टॉक्स चाहिए सर. और हर मंथ जैसे ना SIP करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड करते हैं, उस तरीके से काम करिए. देखो म्यूचुअल फंड्स का क्या लॉजिक होता है, उनका काम करने का भी, वो हर मंथ बाइंग करते हैं. तो वो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में बाई करते हैं, और वो ये स्टॉक्स देखते हैं जो अच्छे लेवल पे गिरे हुए हैं. ठीक है. आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ये कर सकते हो कि जो स्टॉक्स बहुत गिरे हैं ना, हर मंथ जाके थोड़ा थोड़ा बाई कर लो. ठीक है.
Lot of but ask you being 1 year program. I think you have joined the 1 year program, sir. If I am not wrong, Hiteshi. I think you have joined today only. Okay, sir. Go slow. Okay, go slow. We will conduct various sessions there separately. Okay, those sessions will be privately for the learners in the 1 year program. Okay, so you can ask your queries. You can message me, WhatsApp me there. Okay, I will reply your queries. But yeah, I will just simply say that first follow my topics. What all lessons I'm sharing, I have shared, and go through them. Ask your queries regarding them. Slowly, I will explain everything. Okay, go slow. Clear your every topic with take its full knowledge. Okay, never just jump from one topic to other topic. Okay, just stick to one topic. Once your one topic is clear, then take next topic. So you have to move from topic to topic so that things are crystal clear. You should understand things clearly. I have seen many people that just go and jump from different topics. Later they ask me question which are briefly explained it, but they don't know what are the things given. So I just simply say that go to this topic and read it again because I have no solution. Because see, I can give you right knowledge. If somebody is not taking that knowledge, so what can I do? So see, this shipping corporation is at a very good level. It's a monthly chart trend line support. It's a very good support. If it breaks that level, so you can put a stop loss. If you want a stop loss of up to, you can put a stop loss of 30, 29 on a closing basis. I would say it will not fall this. It will not break this level. It will not break this level easily. Now I'm not God that I will say that it will not happen. It can happen. Okay. But as per the monthly chart trend line support, it's a wonderful level. It's a very big level that it will not break easily. See the trend line. So this trend line is actually a support level. Okay. And if you find a trend line and monthly chart, it's a very big support. But why I said that we can accumulate this stock. This is the time to buy this stock. If someone wants to buy, you can buy. But always we have to diversify our portfolio. Friends, any other queries? Else I will close the session here. I have given recently. I have given a PDF on fundamental analysis. I have made some lessons on fundamental analysis. So I have given some important points how we can select a good stock based on the fundamental analysis. Okay. So technical analysis is different and fundamental analysis is different. Okay. Both are different subjects. But if we mix up both the knowledge, so that can give us wonderful returns. I don't know the fundamental of this company. Uh, Let us just.
Shipping Corporation. Let us just go with fundamentals. See, there is, I simply tell you, friends, there is one thing that is called EPS, earning per share. So we should normally select a stock which has an EPS of 20 or more. Okay. Yeah, its book value is 155. So stock is below its book value. So we should look for, if we want some stocks for long-term investment, then we must go with fundamentals. Friends, is there any other queries? Else I will close the session here because I think it's long time. If you have some doubt, I can wait for a few minutes. But now I would say that you can hold this stock. Okay, it doesn't matter if its fundamental are good or not, but surely it will give you some opportunity to take an exit from this stock. Currently, it's at a very good level. Okay, you can average it. Once sustains above 50, then it will, it can go somewhere around 70, 75. Once sustain about this level. But till this level, already it's a support level. So it should move upward. Okay. Hopefully it should move towards 50, and if sustains 50 level, then possibly 70, 75. So I am saying you to just go and average this stock at current level, add some, 25 to 30 or 50 quantity. Okay. And surely your price will come down. If you are holding from 90, so maybe somewhere your price should come somewhere 60, 70 or so. And once at that level, you should take an exit from this stock. Shipping stocks, they don't have good fundamental. Normally, if I believe, I will study its fundamental in detail and will reply. Okay, friends, so I'm closing the session here. Okay, I think I have cleared your queries. And those now it's very long program, it would be a very long, video, we can say. So it would be difficult. Nobody would like to see such long videos. Okay. So conduction of webinar is just to discuss your queries on spot, we can say.
There's a likely possibility that stock can go now. It can even go to 100 also, but it will take some time. So I will just suggest you that just go and average the stock this time. This is the right time to average it out, so that your price of 90 should fall somewhere around 60, 70 level at least, because then you can get out of the stock from cost to cost level. But currently it's sitting at a heavy loss, and past 1 year it has big fall. You're saying you're holding it from some years, so maybe I don't know from yeah, it has from 13 year somewhere. 1 minute, it is down from some quite long time. So this level is a, if we look at for the stock, the level of 90, 100 level has become a very big, resistance for the stock. From 2000, we can say 11, stock could not cross that level. So you're right in saying that you're holding from many years. So I know perhaps that time you don't know how to, average out smartly. There is a smart averaging technique. If you would have used that technique, surely you will not be saying this thing today. 8,000 loss. Okay. So Nirjaji, I have explained how we can average out stock. So you just follow that setup and just go and average. Averaging is must at this level. You must average the stock. Put some more money, okay, and I will simply say I take an exit. At least somewhere where it comes close to cost to cost. This 100 level will be a very tough, journey for the stock to cross easily, because this stock is here in this range from 2011. From last 10 years, this 100 level is a very tough resistance for the stock. Okay, but currently it's at a very big support level, and the monthly chart I have shown you. So you can just go and average this stock so that your loss decrease. Now at this point of time, our target is to reduce our loss. Making profit is secondary thing now. It's a time to just reduce your loss. The only thing that can save you from loss is to just average it out. Okay, so that would decrease your loss currently, because it's at a very good support level. Okay, friends, if there is no queries, I'm closing the session here. So you can make use of this site, friends. This is screener.com. Sorry, screener. Yeah, screener.in. Sorry, this is screener.in. It's a free website. So this site is wonderful in studying, fundamentals. If you want to study fundamental of a company, then it's the best site. And it's a free charting. Sorry, site. You can study the fundamental of a company. There's no dividend. Sales growth is minus negative for last 3 years. Face value is 10. Okay, this is a good point. ROC 3.77.
how to see this book value, current value. So stock is at a very good attractive price at this level because it's book value. Book value means the actual value of the company. If company sells everything, okay, if it goes on auction and if it sells everything, then every stock will be sold at a price of 140. So it's at a very good attractive price at current level. Okay, but we have to see many other things. Just looking at the book value is, it's not a criteria only one thing. But yeah, I will simply say that it's a at a good price level. One can take it, buy at this level. Yeah, this is pros is this book value is a good attractive point. Only one thing is attractive. Okay. Now let us study the cons. Now the company is reported repeatedly profit. It's not paying out dividend. Has lowest coverage interest coverage ratio. Delivered poor growth of minus 3.75 over past 5 years. So past 5 years growth is negative. It has a low return on equity for past 3 years. Yeah, the biggest thing is this. This is the biggest problem. Okay, there are liabilities of 2,640 crores. So you can study different things at a glance. Compounded sale growth, 10 years, 5 years, 3 years. Everything is negative. Okay, most of the things are negative. So even our chart is telling everything. Okay. So just simply, you can average out this stock at current level and try to exit from as soon as possible, from at least with some small loss also. So we have to see it. Even I will keep it in watch list and tell you where to exit. Currently, it's attractive. Okay, you can average it out. Okay, friends, I'm closing the session here. Wish you all the best.